a creative genius whose contribution is not in terms of the laughter that he's brought in all our households, but through his shows he has put the country together in one way. And he's brought out the culture of India in such a beautiful, simple, effortless way. And today when comedy has become so complicated with politics and people become so sensitive, his shows yet remain that simple comedy which is a laughter riot, and so proud and privileged to have somebody, a director, producer, actor, writer, and most of all a role model to India across generations. Thank you, sir, for coming. Thank you. This kind of applause reminds me of my theatre days. After a long time, I'm hearing this such a loud and such a encouraging applause. And I would like to say one more thing, that when we talk of comedy, I have my business partner, my soul brother, my friends, his ages, Atish Kapadia, who writes and who's another genius. I'm sure you should meet him also. And we create together, and behind every dream there is an inspiration, and people like us, they find inspiration by talking to people like you. But sir, you've since years made the country laugh. What has been your inspiration? My basic inspiration today, when I look back at it, I did not, at your times things are much easier, that you all know inspiration, motivation. For us, I'm talking very like, what has been my journey. So it was basically that one has to, earn and run the house. Because I was born in a very financially humble situation in the family, which was financially very humble. But slowly from there, what I realized, most kids start with one thing in mind: is बहुत पैसा कमाना है, lifestyle होना चाहिए, how to do this, how to do that. Very few can decide exactly what they want to do in terms of the career, profession, the kind of life they want to live from a very early age. So I had a talent. I knew I have this talent of singing, acting, and I used to do a lot of mimicry. I used to make people laugh. So I knew I can make people laugh. So this was wherever I went, parties, functions, schools, colleges, everywhere I used to make people laugh. I used to entertain people. But I will do it professionally. I never knew. I wanted to become a chartered accountant then. Then I said, my first cousin had become a chartered accountant. He was very well respected in the family. And I saw he was living a good lifestyle. He was quite elder to me. As a chartered accountant, Manoj. I went to a college called I.I.M.U.N college with one object. एक ही college का form भरा था मैंने 10th के बाद. I.I.M.U.N college. वहाँ से best chartered accountants 12 थे. I went there. There I got a platform. College में I saw the crowd and I could entertain them. From there I did, I'm not the one who can sit at one place. I can't sit at one place. Chartered accountants are very respected professional society, but they have to sit most of them as a desk job. So I said, and by then I had got some opportunity to perform on the stage of I.I.M.U.N college, which was a big college. Inter-college drama competition started. I went to inter-college. Slowly I realized that अभी भी पढ़ना ही है, तो MBA करेंगे. So then I went to college for management. By then those inter-collegiate competition had got me a play, Gujarati play for the proscenium, which is called a commercial, project where you perform plays, sell tickets, people come and watch. This is called proscenium. I got a very good opportunity for my first play. It was the title role. I'm the central character. I'm the hero. And I realized that hello, I want to do this. At that time I was working in a advertising agency called Mudra Communication. Why I went to Mudra Communication? Well, dream था. अपनो गुजराती अपना खुद का बिजनेस सोचता है. वो यहाँ सीखीश પછી મારી પોતાની એડવર્ટાઇઝિંગ એજન્સી ચાલુ કરી. I will have my own advertising agency. I went there with that purpose. But
That was my turning point of my life where I went there. I was doing theatre, then also I was doing, and in that I had bosses who were good, they were good. They could not motivate me. Their performance, I felt that these bosses are not good enough to, so I kept changing from one department to the other, changed 5 departments in 3 years. And I realized, I don't belong here. Then I spoke with my one. That time I realized, now theatre. That time TV, it was just satellite channel Z had just started. So it was not even that I'll make a lot of money. But I knew one thing, that throughout my college, I was a leader. I was a general secretary of college nursing college twice. I was the best student twice. Where in my school I was a monitor. In my management institute I was again representing the class. I had that leadership quality in me. I realized that I cannot live just alone on my talent, acting talent. What I will have to do is, I will have to use the other talent, which is also very, very important, is my leadership, and I will have to produce. So before quitting my job, I wrote a letter to myself that Joe, I have this talent, I can do this, but in acting, I wanted to become a film star, I wanted to become a lead, I wanted to become a hero in Hindi films. So I tried that, but my destiny had some other plans, and I kept, whatever I wrote to my own self in that letter, everything has turned true till date. I wrote it when I was 23, and it's almost more than 40 years now, or more than 30 years now. But you have to, where I'm connecting it, what you want in life, and it should not be just in terms of money, assets. What you want in life, it should be for your own self. It's too early to talk about the souls. You have a very young soul, but when I was talking to Anjani and Rishabh, I realized that you all are already on that path by joining I.I.M.U.N. You already are on the right track from now. I wish I would have had something like this at an early stage of my life. I took a lot of years to decide, figure out, and then I started my journey. So, one thing, when we come to the question about inspiration, I was not sure what inspired me at the early age, but then once I realized that, okay, I need to act and I need to produce. What will I produce? Do I want to make money? I said, then there were some production houses whom I saw, and they were pure commercial plays. I started my journey with theatre production, Gujarati play production. So I said, no, how play nathi banao mane. That's the time I realized that I do not want to chase money, though I needed a lot of money, because to be a producer, बाकी सब में टैलेंट चाहिए, एक्टर, डायरेक्टर, राइटर, सिंगर, कुछ भी हो, बट टू बिकम अ प्रोड्यूसर, it's not just talent you need money also to produce. So I said, I को पैसा भी चाहिए, but then I said, if I just chase money, just run after money, then I will do something which may not be right. So I said, नहीं यार, पैसा तो पीछे आएगा. Let me just do good work. Let me first do what I believe in. Let me work on something which is really, which can impact lives, which can entertain people. And I created a fund, like me, whenever I say I, assume B, because I always believe that it's always a teamwork. And as that time, my business partner, Atish, so we said, okay, let's not do something like this. आपने एवुज कहीं करी ऐसा करते हैं जिससे लोग इस जिंदगी में, थिएटर भी क्या होता है ना, एंटरटेनमेंट, वहाँ देखे 2.5 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा हंसे, हाँ बहुत मजा आएगा, आज तो अच्छा खाना के घर पे चले गए, संडे मस्त हो गया. नो, वी बिलीव्ड इन टेक होम थियरी, that let's entertain people which they can not only be entertained there but they take home. तो आज आप कुछ हमारा शो भी देखते हो ना, तो आप सिर्फ वहां नहीं हंसते हो, उसके बाद भी बहुत बार हंसते हो. That's the theory we invented for ourselves when we were just very young, and we have tried and continued that. मैं एक सवाल पूछा है पर 3 जवाब देता हूँ, खास करके आपके लिए बहुत जरूरी है. इसमें मैंने एक बात बोली, अगर आपको मेरी ये बात का मैं थोड़ा क्लैरिटी कर देता हूँ. Chasing money at a right time for right thing is different. But remember, chase good work, money will follow you. Money will chase you. And
उसका एक सिंपल सा फंडा है मेरा। अब जब स्कूल में थे, बच्चे थे, एकदम छोटे बच्चे थे, तब आपकी जेब में जितने पैसे थे आज उससे ज्यादा होंगे। आप यहाँ से कॉलेज में जाओगे, ज्यादा होंगे। कॉलेज के बाद जब आप बाहर निकल के काम करोगे तब उससे ज्यादा होंगे तुम्हारे पैसे। उसके बाद आप जब और थोड़ा आगे बढ़ो, इतना याद रखना, ज्यादातर लोगों की जिंदगी में आज जो पैसा है उनकी जेब में उससे कल ज्यादा ही होता है। तो पैसे के लिए कभी कुछ करने जाओगे ना, वो पैसा अपने आप ही आएगा। ये बहुत ही सिंपल फंडामेंटल है मेरी बात। आप आज मानोगे भी, हम जो स्कूल में थे तो हम एकदम 5 रुपया 10 रुपया मिलता था पॉकेट मनी, आज 100 रुपया तो कभी भी जेब में होता ही है। मोबाइल का बिल भरने का इतना पैसा, क्या क्या नहीं होता तुम्हारे। मनी हमेशा बढ़ेगा, कभी इसके पीछे मत भागना, काम अच्छा करना, व्हाट यू वांट टू डू, बिकॉज टाइम जैसी कोई बड़ी करेंसी नहीं। वी एड्रेस इट लेटर, वापस उस पर आऊंगा मैं। टाइम जैसी करेंसी, अगर मैं कहीं भी भूल जाऊं तो एंड में मुझे बोलना कि सर वो क्या बोलना चाहते थे। Very well answered, and especially the thing that you said about leadership, to chase, to be a good leader. Yeah. That is something that we teach these people also. To not run after materialistic things like money, especially at this age. Yeah, absolutely. It's very important to decide at this age itself, because these are the years which will they are all fundamental years, like it's shaping you up and building you up. So जिसका हम कहते हैं बहुत क्लीशेड बातें होती है, इसके पिलर स्ट्रॉन्ग होते हैं, बेस स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसकी इमारत मजबूती होती है। क्या ऐसे डायलॉग तो मैं लिखने भी बंद कर दिया आजकल बट वो सच्चा है। कुछ चीजें हम उसको क्लीशेड बोलते हैं, पर वो बहुत सच्चा होता है। वो बहुत संभाल के रखना होता है। रूट्स जो होते हैं ना, कोई भी पेड़ ट्री ऐसा सोचेगा ना, क्या है मेज हटाओ रूट को बाहर, वो इतनी हवा चलेगी तो गिर जाएगा। और जब हमारी जिंदगी आगे चलती है ना, बहुत हवा चलती है एंड बहुत बार गिरोगे। सो इफ यू आर स्ट्रॉन्ग विथ योर रूट्स, इफ यू आर रूटेड, which we are still, in spite of getting a lot of success to everything you can say. Our field is very deceptive. The world of glamour, the fame, money, what not can, distract you at any point of time. But we were very sure about certain things, that we will not move away from our roots. We will grow. We have to grow every day with every show, every content we made. But we cannot go away from our roots. Never be away from your roots. हिंदुस्तान का कल्चर और जो आपको सब सिखाया जाता है, they are outstanding things. You will realize that where every time I'm going to reply some questions later, but कुछ चीजें मैं उसमें भी बात करूंगा कि how I'm still very rooted, very traditional guy, and how it helps me. So next question that we want to ask is, you have worn multiple hats. As a producer, actor, director, which one is your favorite? Creative producer. Because at one particular age, I just wanted to become actor. Yeah, I wanted to, I was still growing up, I was maturing. I'm still maturing. Still learning. Because that's what I believe, that every day is like, and learning is so much joy. So, that time I wanted to become, wanted to do lead roles in Hindi films, and so the major focus was on acting. I was doing very well on Gujarati theatre. But from there, I realized that when I'm acting, if it's not in my production, then I am trying to, tell the stories of different people. Stories which have come out. It's good to collaborate and act with some of the real good directors, writers. But that's time, because after working with 4, 5, 6 production houses and plays, I just say, there's always something not right, or something not adequate, or something not sufficient, or something is the way I want to say, or the way we want to say. So when we started doing that, we realized, okay, we can tell story in this way. We had our own convictions which are different from others, and we could tell the stories in new, different ways. We could actually, हमने हमारा रास्ता बनाया,
तो हमने हमारी कहानी हमारी तरफ से, वरना खिचड़ी के बारे में कोई सोच नहीं सकता था उन दिनों में। वो ऐसे दिन थे जब क्योंकि कहानी कसौटी वाले शोज चलते थे, 2002 की बात कर रहा हूँ मैं, और हमने जब खिचड़ी सुना है तो चैनल वाले ऐसे हो गए थे कि जहाँ पे पिताजी का इतना रिस्पेक्ट होता है और हम बाबूजी का क्या क्या हाल कर रहे थे। तो वी रियली सेड कि हमको कुछ, व्हाई, बिकॉज़ इट वाज गुड प्लेस, जो हंसाता भी था और सिखाता भी था। खिचड़ी का पहले 5 एपिसोड निकालोगे ना तो उसमें काफी फिलोसॉफी भी थी। वी हैड सम वेरी सीरियस इश्यूज, वी डेल्ट विद सम सीरियस इश्यूज आल्सो, बट देन पीपल स्टार्टेड टेलिंग अस, सर सब शो में ऐसा आता है, आप इसमें ज्यादा कॉमेडी करिए। तो आतिशोर में ज्यादा कॉमेडी में, फिर खिचड़ी को आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, इतना पागलों का परिवार, तो हमने उसको तब से फिर उसी रास्ते पे, पर उसके बाद लोगों को लगा तो खिचड़ी जैसा ही काम कर सकते हैं। ऐसे ही गुजराती परिवार का हम लोग, ये तो डेंजर है, ये तो हमारी, हम यार टाइप कास्ट ना हो, लोग हमसे ऐसा ही एक्सपेक्ट करें जैसे पागल जैसी कॉमेडी, और गुजरात में मिल गया ऐसे ट्रेडिशन, तो बोलते हैं कंप्लीटली इससे अलग फैमिली बनाते हैं गुजराती। देन वी केम अप विद सारा वैसे सारा भाई के ऊपर आउट नहीं करूँ, कुछ अलग ही करते हैं। तो जस्ट टू डू कंप्लीटली डिफरेंट वी थॉट ऑफ सारा वैसी सारा भाई। आतिश कापड़े के बहुत सारे रिलेटिव्स हैं जो ऐसे ही दिखते हो, ऐसे ही बिहेव करते हैं। एंड देन वी वांटेड टू डू सम सीरियस गुड ड्रामा, then we came up with Babu or Baby, which was again very. So, as creative producer, taking part in every area, it allowed us to take part in every aspect of making, be it writing, be it creative direction. के फ्लोर पे अगर हम पूरा दिन देख के डायरेक्ट नहीं कर पाए कुछ, तो भी हम डायरेक्शन में बहुत इन्वॉल्व थे। सारा सीन कैसे होंगे, चूजिंग एक्टर्स, डिजाइनिंग देम, देन म्यूजिक, editing, marketing, every part. So I realized that process is much more satisfying than just acting or directing or just writing. So multiple heads वहाँ से आने लगी कि okay I like this also. जितनी expertise जिसकी है उस डिपार्टमेंट के हम एक्सपर्ट्स को भी हमारे साथ रखते थे। And but we also used to take part a lot of part in every aspect of making, and individually personally if I say, like right now I am very much involved in a show called वागले की दुनिया, अगर आपने देखा, I believe वागले की दुनिया is what works, you know, it is so much with the philosophy we just discussed, and it is so much life impacting, it is so much about teaching right values, how a family, middle class family, bonding, culture, roots, morals, values, everything, with entertainment. This is what I enjoy the most, and there I am creative director, I write stories, I sit on everything, look to post mein, I decide the edit to everything. So multiple head and being a creative producer is what I enjoy the most, because I get to do everything. And because of that, you got such amazing stories. Oh yeah. And I think Wagli Ki Duniya finished some 600 episodes. 700 episodes and going very strong. Yeah. So hopefully next year we'll be getting into the 4-figure number. Hopefully. And sir, since you've done so much, you've been involved in the entertainment industry for a long time. Now with the rising of digital platforms, the entertainment landscape is also changing so much. I'm sure it comes with its own pros and cons. What do you think with the rise of OTT? OTT still, I would say, in India is still just maturing. We are, because there are a couple of very strong platforms which are, international, and that's why the world is looking at the kind of Indian content consumed in 300 odd countries, and there are some which are television, backed by the TV companies, so they have their TV series also, and their content is still somewhere in between, they know, because the TV viewers also come on their platform. So we still are not very sure. There is no one definition which we have for TV. That TV is still for family audience, but OTT is no more. Some people feel it is for we should bring families, because now that Fire Stick, you can watch it in the big screen in the house, and if you are watching, your parent also can walk in anytime, and the kind of, or even parents are watching the kid, the 5, 6, 7-year-old kid also can walk in. So that is still, I feel it's maturing, and that is why जैसे टीवी है,
इज अबाउट फैमिली, हम सब साथ देख सकते हैं. और OTT जस्ट चेंज वन थिंग, दैट साथ नहीं, ये मैं अकेला भी देख सकता हूँ, ये मुझे अकेले देखना है. वरना तो सबका पहले क्या होता था, हमारा फेवरेट शो ये है, साथ में बैठ के ये घर ना हमेशा भी याद है कि पहले पीपल यूज्ड टू से आवर फेवरेट शो इज दिस. नाउ इन दी फैमिली पीपल हैव स्टार्टेड सेइंग माय फेवरेट शो इज दिस, मेरा फेवरेट शो है वो. हमारा से मेरा गुजराती में अच्छा पड़ता है, वो अच्छा लगता है. हमारा थी मारा के मारो ये थे यू. सो OTT and it's so much personal that the communication is so direct. And now when you imagine earlier, अगर सब फैमिली देखते हैं तो देर वर से, जैसे हम गिविंग यू फॉर एग्जाम्पल, हम सेइंग सपोज 1 लाख परिवार देख रहा है, तो यू नो यू टू टारगेट 1 lakh families, and those 1 lakh family will have similar philosophies. So you try and target something which can appeal to all 1 lakh people. But now in that 1 lakh family households, there are 2, 3, 1 thinking different. So on an average, there are 3 to 4 lakh viewers. So they again think differently. So your variation is, it's expanded. The canvas has become bigger. Now to cater to all becomes difficult. So OTT does what? They pick age groups. That okay, in that fragmented area, we pick age groups and let's target to them. So the youth basically is slowly or has slowly moved out of television because they like to prefer to not watch with the family, and because the timing also. See, so multiple factors have worked on it, that like their favorite show, which was earlier available only at one particular time slot, but now they know they can watch it separately. They can do it at 11:30 after they finish their studies, or being with friends or everything. So that convenience has also taken them away from one set. At the same time, that gave them some privacy, that relationship with that instrument, and they can now. So slowly the viewing pattern has changed, or is changing. It's become very personalized. So no platform right now, no OTT content maker is very sure of what to make. In that, we still feel and felt like, if I come back to what we think and how we try to be different, we thought that no, you still can bring the entire family back to watching OTT, and that's why we did Happy Family Conditions Apply. We said, okay, if you want to be a little different, you want the youth, we'll always, the generation changes, how far, we just discussed how quick the generation, like we were talking about the millennials, now we are the Gen Z to Gen Alpha, to what will happen in next 2-3 years, I don't know. So to cater to everybody and bring them to that, make them feel that OTT में family के साथ बैठ के भी मजा आता है, some programs you can see, and there are some talks which actually happens in family. So we try to bring it to OTT also a family show. Let's see. As I said, everything is just OTT platform is maturing. This answer cannot be very definite because there is nobody is sure about it. So everybody you see suddenly a lot of crime-based serials. Then you suddenly see a lot of horror. Then you see a lot of serious drama, the romance, the love stories. Then you see a lot of intimate content. But there is no one particular, you can say that formula that OTT you can say this will work on OTT. Everybody is gathering, it's maturing. Experimenting. And Happy Family is a good example. It caters, it addresses LGBTQ as well. And everyone. We always believe in that. Parents, grandparents are also able to see themselves. And what a grandparent Ratnari played. And sir, coming to your contribution to Gujarati, basically theatre and regional cinema. No, that's fine, please. I'm an animal lover. I have my lovely cute dog, a Shih Tzu. We have named him Kichu.
गुजराती डिश है खाने का. Every time I go to airport, he comes to drop me. And if I drop him, अपनी बैग पे बैठ जाता है. So I was talking about your contribution to theatre and regional cinema, and I think so you did cover it in perceiving the future of the cinema. I think it is still experimenting with OTT and everything. Do you have a vision of how the entertainment industry will look in the next 5 years? See, I cannot have a vision for the entire industry. I'll tell you why. It's such a dynamic world of so many creative people. And there are so many people whom we look up to. And so, in general, if I talk of the industry, where it is going is this particular industry, entertainment industry, is always like the way generation changes in 5 years now. Because especially film industry, which directly depends on the kind of theatrical business. And lately we have seen a change which never ever anybody anticipated, that people will stop going to theatre. But I believe that has come out. What one thing is I can say or closely even dare to comment is the convenience of people will decide a pattern in the industry, especially the kind of cinema. Cinema leads a lot. So the kind of films you make, from there you derive a pattern of TV and to an extent storytelling of web series also. But now these days, as I was talking about, people will go to theatre only for big budgeted films because of the experience, and then they will decide that okay, for this content I do not want to spend so much. This I can see it on the small, like on a phone also, or I can sit on my tablet also. So such things will decide the pattern of content being made for big screen, then the small screen. TV needs to be little more revolutionary. That's what I can say, because I'm making a lot of television. I always feel TV is not still progressing with time, because if you ask today, the youth is not, they will watch 1 or 2 shows or their favorites, but you can't say, "Arey, TV dekhne mein bahut maza aata hai," which used to be earlier. And few years back, in the time of, you must have just heard from your parents, जैसे उनकी स्ट्रगल स्टोरी बोलते हैं ना कि मैंने क्या क्या पापड़ बेले, तुमको क्या मालूम, पेरेंट बोलता है बेचारा. बट दूरदर्शन डेज, वी यूज्ड टू हैव रियली गुड कंटेंट इन अर्ली डेज. अगर आपको आज भी देख लो, आगे दिनों में तो दूरदर्शन पे आता था, कुछ अच्छे शो आते, तो उस तरह का कंटेंट टीवी मस्ट मेक टुडे आल्सो. एंड ओटीटी, एज आई सेड, that it's still maturing. So in general, the content will be which can travel across the country. India will always try to achieve that, how our films go to other countries, how we can make it, world as one platform like the music has. And especially the Western music, the kind of influence it has world over, the kind of Hollywood cinema, it goes in every country. I'm very sure Indian content, because of the variety we have, different languages, regional, and the kind of variety we have, we will reach the world very soon. And with India getting Oscars also. Oh, of course. Song, the first day, I remember the first day I was watching, it was, there was a video on YouTube, and they were showing the making of that song, and I got hooked with that hook step, and I told Atish and my team, I said, याद रखना, ये song ना, ये साल का सबसे बड़ा hit होगा. तो होता है ना, बॉस से तो कोई भी सुन लेता है, तो तभी ना, हाँ बराबर है. But when it got the Oscar, I said, बोला बराबर.
Why? Because that song had that element. Whoever heard, हम डांस कभी नहीं कर पाते उस पर, थोड़ा थोड़ा ऐसे पार्टी में थोड़ा करते, but that song had some, because the thought process, because they believed in that we this time want to create something which is like nobody can easily create. So always think like that. जो सोच है ना, मैं क्यों ये बोलना चाह रहा था आप सबको, when you think of something ना, think of something very big, not just in terms of budgets, in terms of idea. The difficult and challenging is, don't worry, that will always show you a way कि कैसे वहाँ जाना, how to reach. But think, ये तो ठीक है, बड़ा कैसे बनाओ इस आइडिया को, ये थॉट को ज्यादा लोगों तो कैसे पहुंचाओ, कैसे वो ले जाओ कि ये लाइफ टाइम यू नो टाइमलेस हो जाए, सालों साल तक. दिस विल बी यू नो, जिसको हम हमारे टर्म में शेल्फ वैल्यू वाली बात बोलते हैं कि शुड हैव अ शेल्फ वैल्यू. हम आज भी टीवी बनाते, तो टीवी पहले क्या था, इट्स लाइक न्यूज़पेपर की तरह है कि भाई आज पढ़ा कल हो गया, पहले एपिसोड का ऐसा होता था. बट वी नेवर थॉट ऑफ मेकिंग अवर टेलीविजन लाइक दैट. वी सेड शेल्फ वैल्यू होना चाहिए, बाद में भी देखेगा ना उसको मजा आना चाहिए. एंड आज भी देखे तो सारा भाई, द वे वी मेड सारा भाई, यू स्टिल वॉच देम टुडे, यू फील क्या यार ये टाइमलेस है. आज भी इंद्रवदन रोज उनके कपड़े सेट्स कुछ काफी आज 20 सालों में हुआ है, बट स्टिल दैट टाइम यूज्ड टू थिंक लाइक दैट. सो व्हाटएवर यू डू इन योर लाइफ, ऑलवेज थिंक कि मैं आज जो रहा हूँ बहुत बड़ा होना चाहिए. सालों उसमें छोटी छोटी चीजें सोचोगे ना, अपने आप आपको रास्ता दिखाएगा. And so you said about creating things which are revolutionary, and you created so much of it. And so your comedy is something which is testament to being unparalleled. But so today, like I mentioned before also, comedy has become so complicated with politics and everything. People have also become very, very sensitive. Does it interfere with you, and how have you still managed to keep comedy so clean and out of politics, and everybody across geography, across generations enjoys it in the same manner? It's actually a secret, and nobody has been able to do what you've done. We always believe that we cannot hurt anybody. See, laughing at the cost of someone else is never what we ever practiced. So there are types of humor at places you get to see offending the audience also. And there's one kind of humor. Like if you go to show most of the stand-up comedy, he or she will pick one or the other guy and have few jokes and everybody laughs, but some people also enjoy. That is okay at times you do in a show, but on television or on screen, if you try to do that with particular people or a caste, community, or say something about religion or a political comment, then today's time it's not healthy. Because as I said earlier, that we creative people are influencers. You know, a lot of people follow us. You may have said it. We have to be responsible in whatever we make, whatever we say. And when you make a statement, people make the pussies. Even in humor, with humor things travel very fast, very easily. Because today a gag, people will forward it more than a serious message. So you have to be very, very responsible. At the same time, a humor should be in good taste. So we have never believed in, bringing something or somebody down into the. So that's always been our thinking since our theatre days. That no, ये नहीं करेंगे. 4 jokes कम होंगे तो चलेगा, but not the cost of anybody else or hurting anybody. So that is what, and as I said, we are influencers. We believe in clean family comedy, because कुछ कभी बार ऐसा भी होता है कि अगर मैं जो अपने परिवार के साथ बैठ के नहीं देख सकता हूँ, तो मैं दूसरों को कैसे देख? If I can't see with my parents, my daughters, my family, like our families, then how can we present it to people for to watch it with their family? So multiple philosophies help us keep all this, our work very clean, and we have to let go of so many shows and content also at times. And one of the very successful show I can't name right now, but we had to let go. We said, नहीं, ये family time पे आने वाला ना,
तो हम नहीं करेंगे. This is we will keep it. Our condition was, if you are doing this show, you will have to do it late night, and you will have to say on television that only for adults. So, how can we do that? We will do the repeat also in the afternoon. So we let go of that show. Then we will know. Because we knew with our image, a lot of family audiences will come. It's not that doing adult humor is bad. The world over it works. And people above 18, they should be able to consume, because that's a very nice way of communicating with parents at times. In our country, the communication with the parental generations. These days the schools also take extra efforts to have sessions on sex education to so many other things. Otherwise, there's always a huge gap between the young, teenagers when they're just turning 13, 14, and their parents. People find it little difficult, uncomfortable. So, and it remains for a long, long time. So we felt that adult humor is, if done in a right way, right manner, quite healthy. It should be done also. But then it should be for that audience only. For TV, right now, because our major work is on TV, we believe that keeping it clean is very, very important. That's a conscious choice, and that is where you draw. Yeah, we have. And we will always be like that. And so you set these boundaries and you led the industry in a certain way. And by giving us so much of laughter, you also address the issues and rights of artists. What initiatives or changes would you like to see to further improve the working conditions of artists? Mumbai is a city where most of the content, Hindi cinema, Hindi TV series, or OTT content is shot. It's a hub of the Bollywood, when we call, so it's Mumbai. But infrastructurally, Mumbai is not. It does not have that kind of infrastructure. We have only one film city, and not that we have enough number of studios to locations. And Mumbai also has huge Marathi industry also, creating a lot of content, so many channels, Marathi films, and so many other language films are like Bhojpuri, Punjabi are also shot a little in Mumbai. So we do not have that kind of infrastructure. We are huge in business, but not in terms of. I would feel that Mumbai city needs a lot of infrastructure, because a lot of our shows are being shot in, say, beyond the reserve. There are shades. Studios have come up. Good growth, but not the kind of growth actually I would like to see. If you look at the world, every good country will have real good infrastructure in terms of huge film cities and lot of there are a lot of floors with a lot of different facilities, which we lack in Mumbai. Like hardly, I can't recall anything which has complete infrastructure under one roof. So infrastructure in totality. And when I say infrastructure, then there is not only the places where we shoot, but in terms of nurturing, teaching talents, we do not have enough good institutes where people can see. We know writing, direction, cinematography can be taught or learned, but there are so many other crafts like lighting boys. They just come and learn on the field. So whoever walks in first, he doesn't know किधर क्या connection लगाना है, तो it's almost our lives are at risk. And there are so many crafts. Most of them they learn on the field. We do not have proper institutes which can teach people. This is one thing I feel that we should have. We should have many things, but this is one basic infrastructure, proper studios and proper institutes to teach all kind of courses, all kind of jobs which we require in entertainment. Hats off, productions can get into. I tried, but it requires a lot of, it's a more than full-time job.
So then I have to choose that what I want to do. So I felt that I'm doing creating content is what I am right now good at, and focusing at the same time. I'll tell you, I've played a big role. I don't know whether you all know about me. I am the chairman of Indian Film and TV Producers Council since the last 15 years. In 2008, there was a strike which took place because there was no payment system to the workers, and the workers' union went on a strike. That time I was just one producer. I did not know how the unions operate, how the industry operate. So I went to one of the meeting and I said, "Oh, everything is here, like so totally different than what we think." Then I got into it, and with few of my producer friends, I've been leading the industry since last 15 years, and we created systems. Group of some producers, we created system which has made. Well, earlier there's only model based on derived from the films only, but films and daily soaps are completely different. Films are shot in 40 days, 50 days, 60 days, and in different schedules. But TV was like by 2008 there were proper daily soaps which had a monthly economy. So people were actually on jobs, and we defined all that and created an infrastructure which has made industry today go from Monday to Thursday to almost Monday to Sunday. If you see, couple of channels have episode every day, and they are doing it very smoothly. Then how do one produce content every day, one episode? But we created that infrastructure in terms of systems, not in terms of say studios or post-production studios or the training institutes I spoke. But about systems we could, and I played a very major role in that. I always believe I was see, producers association, like every producer is individually a leader in his own capacity, himself or herself is a leader itself. I got the opportunity. So आपको किसी के लिए कुछ करना भी हो ना, तो आपकी किस्मत में होना चाहिए. I believe strongly. Even if you help somebody, no, you can't decide to help. You should be fortunate enough to help somebody. So I feel that I was destined and very happy, as I mentioned earlier, that leadership is a talent. And ऐसी opportunity आती है तो you can nurture your talent. Otherwise मैं कुछ नहीं करता, अपना कुछ काम कर रहे थे. So I am fortunate that got an opportunity. Of you to say that. Oh, I believe in it. So this is where we really wanted you to come, because you are the right young model, and these people should learn that. See, I would just say, being modest, when she said just purely, I do not want to, like speak more about myself, but where I got this from. My parents are a big role model for me, and सबके parents बहुत अच्छी बातें करते होता क्या ना, हम उनको seriously नहीं लेते. But मैं एक अच्छा बंदा हूँ, एक अच्छा बेटा हूँ. ये बात मैं दावे के साथ बोलता हूँ. My parents are so proud of me, not because I'm successful in, I've achieved something in my career. I have been a very obedient son. मेरे और बहुत रिस्पेक्ट और प्यार करता हूँ मेरे पेरेंट्स. आज भी मैं जाके मेरी माँ को इतना प्यार करता हूँ, हक करता हूँ, किस चीज करता हूँ, मेरी माँ बड़ी खुश होती है. My mother is 86. My father is 96. I hug my dad. My father is bedridden. I love him. Because if you can not show your love, respect, affection to your parents, तुम दुनिया में किसी को पूरा नहीं कर पाओगे. I believe कि जो सबसे important characters है हमारी जिंदगी के हमारे parents है. और parents में भी हमारे point से कुछ चीजों में right wrong नहीं हो सकते हैं. But that does not take away anything about their love, unconditional love towards us. उसको कभी मत भूलो. और मेन बात, जो मेन बात थी, हमेशा बचपन से हमको बोला जाता, एक कहावत है गुजराती में कि डाળ पर फ्रूट आवे ने, फल लागे ने, तो डाળ વધારે नीचे झुके. उसका मतलब है कि जब ब्रांच है उसमें ज्यादा फ्रूट्स आते हैं तो वजन बढ़ता है ना, ज्यादा फ्रूट्स आ गए तो झुकेगी नहीं तो क्या हो जाएगा, वो पुष्पा जैसा हो जाएगा. झुकेगा झुकेगा नहीं झुकेगा, पुष्पा लाइन झुकेगा नहीं साला, ऐसा कुछ होता है. बट ये तो नहीं झुकेगा तो टूट जाएगा. बिकॉज यू ऑलवेज हैव टू बी हम्बल, यू ऑलवेज हैव टू बी ग्राउंडेड, देन ओनली यू विल रियलाइज दैट यू विल
be able to see the right things with the right perspective. It's very, very important. Success should never, on the contrary, it should make you more and more and more humble, because you never know when things will change and the people around you start feeling, you know, at your age, it's very, very important. कभी किसी को बुरा लग गया, ग्रुप में ऐसा हो गया, वो हो गया, ये हो गया, किसी ने थोड़ा एटीट्यूड दिखा दिया, तो कैसे झगड़े में कैसे टीम टूट जाती है. It is very important the way you all are dealing, you know, in leadership, and you know, you are doing so many good things. Humility तो बहुत जरूरी है. It's very, very. I can go on and on for it, but. So my next question was this: you've given so many advice to them, so you know, in bits and pieces. But one piece of advice, if you must give, what would that be? Because we have so many people joining us from different schools also online. Time. Time is the biggest currency. Today you may not realize, but when you grow older is every day we grow older. Not, I'm not talking about the 80s and 70s, but then you realize that, oh, I wasted so much of time. And what? When you waste time, you waste life, because our life is calculated on what? Basically time ना. इतने साल जिया वो हमारी जिंदगी है. सिंपल है ना. तो जितना टाइम वेस्ट करते हो ना, उतना लाइफ वेस्ट करते हो. दैट पार्ट ऑफ लाइफ यू आर वेस्टिंग. एंड अभी बहुत वक्त होता है, जैसे अमिताभ बच्चन जी ने बहुत अच्छी बात कही थी. आई थिंक इज बीन टू योर इंस्टीट्यूट वंस. ही सेड कि पहले बहुत वक्त था. जब वक्त था तब कुछ चीजें वक्त थोड़ा वेस्ट किया था. अब क्या है ना, बहुत अच्छा काम आ रहा है, उतना वक्त तो जी जाता है. इमेजिन पर्सन लाइक हिम, तो कितना काम किया. वो ऐसा सोचते हैं कि आज उनके पास इतना काम आता है, वो सब नहीं ले पाते. ही वांट्स टू डू एवरीथिंग. इतने इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, वो सबके साथ होता है. एक वक्त चला जाएगा, शरीर साथ नहीं देता है. अभी क्या ना, बॉडी में बहुत एनर्जी है. कितने लोगों को, मैं आपको क्रिकेटर के एग्जाम्पल देता हूँ. अभी हमारे ऋषभ पंत एक इंजरी आ गई. अभी हमारे कुछ क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने थोड़ी अपनी लाइफस्टाइल में, नाम उसका नाम नहीं ले सकता, एक लेजेंड बन गए. किसी ने अपना लाइफ में थोड़ा सा वाइसी से उन चीजों में अपना वक्त जाहिर कर दिया, तो इंटरनेशनली क्या करियर बन सकता था, वो हाथ से चला गया. तो बी वेरी मच फोकस, एंड दैट डज नॉट मीन यू डू नॉट हैव योर टाइम. बेफिक्राई वाला मस्ती, दोस्तों के साथ चाय पिया, ये किया, वो होना चाहिए. दैट्स ऑल बिल्डिंग अप. वो वेस्टेज नहीं है. पर कुछ नहीं करना, रात को तो 1-1:30 बजे तक जागे और दूसरे 12 बजे जागना, वो नहीं होना चाहिए. यू हैव टू हैव डिसिप्लिन. यू हैव टू रिस्पेक्ट टाइम, एंड टाइम इज द बिगेस्ट करेंसी. सो आपको कभी लगता है ना कि इतने पैसे के लिए मैं इतना टाइम, वो आप सीख जाओगे. तुम लोग ये फालतू में फ्री में मिल रहा है ना, इसलिए मुझे ये पिक्चर देखने नहीं जाना है. 3 घंटा कौन बिगाड़ेगा. आई माइट एज बी रीड अ नॉवेल. मैं 2-3 घंटे का अच्छी नॉवेल पढ़ूंगा ना, तो मेरा इमेजिनेशन और व्हाट थिंग्स है. ये एक एग्जाम्पल दिया. आप सबका अपना अपना कुछ ऐसा होगा जो आप अपने ड्रीम के लिए कुछ करना चाहते हैं. याद रखना, एवरी मिनट उसमें आपको कैसे मल्टीटास्क करना है. बीइंग लेजी विल नॉट पे यू एनीथिंग इन लाइफ. इट विल टेक यू नोवेयर. सो देयर आर सम क्वालिटीज. हमको ऐसा बहुत बार लगता है और हम टाइम वेस्ट ऐसे कर देते ना, पर टाइम जब आपको पीछे रियलाइज होगा ना, तो आपको लगेगा मैंने वो साल वेस्ट किया यार, मेरा बड़ा अपॉर्चुनिटी चला गया. ऐसे ऐसी चीजें चली जाएगी ना कि आपको बाद में बड़ा रिग्रेट होगा. सो रिमेंबर, टाइम इज द बिगेस्ट करेंसी. पैसे से ऊपर जो नोट देखते हैं ना, 50, 100, 500, 1000, 2000 तो बंद हो गए, तो उसके ऊपर है टाइम. टाइम इज द बिगेस्ट करेंसी. वैल्यू योर टाइम. कभी भी घड़ी नहीं है तो प्लीज एक खरीद लेना, या तो मोबाइल के टाइम पे ध्यान रखना. वन ऑफ द बिगेस्ट, सबसे ज्यादा अगर कोई ध्यान है ना तो इसका रखना. एंड सेकेंड, अभी बोला ये प्लेटफॉर्म पे बैठा ही हूँ, फ्री में एडवाइस दे रहा हूँ, तो ले लो. हेल्थ फिटनेस आज के लिए नहीं, आज बहुत सारे डाइटिशियन या हेल्थ इंस्ट्रक्टर, आज वो प्रोफेशन जो 25 साल पहले नहीं था, आज वो इतना आगे बढ़ा है. आने वाले 25 साल में वो और बड़ा बनने वाला है. क्यों? एवरीबडी विल बी फोकसिंग ऑन हेल्थ. सी द वर्ल्ड इज बिकमिंग वेरी वेरी अवेयर. और मैं बाकी सब चीज बाजू पे रख देता हूँ. योर ज्यादातर सबकी जिंदगी में एक लाइफ पार्टनर कंपेनियन आएगा, ऐसा समझ के चलता हूँ. शादी होना वो अपनी बात है, पर एक कंपेनियन तो आता ही है सबकी जिंदगी में.
आप याद रखना, आने वाली जनरेशन ना बहुत हेल्थ कॉन्शियस रहेगी, वो बड़ा फैक्टर होगा। अच्छा दिखता है कि नहीं दिखता है सेकेंडरी होगा, इसकी सोच कैसी है हेल्थ के बारे में। एंड इट्स नॉट ओनली मेंटल हेल्थ, इट्स नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टू हेल्थ, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, वो दो को कैसे बनाए रखना, ये मैंने आपके I.I.M.U.N के बारे में सुना है, फंडामेंटल का है। यू आर ऑन द राइट ट्रैक, प्लीज ध्यान रखना, अपनी हेल्थ को बनाए रखना। और इसी तरह का मैसेज जिस पर आप अभी आपकी नींव बन रही है, उसी तरह के मैसेज स्प्रेड करना, दैट हेल्थ मेंटल एंड फिजिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये दो एडवाइस अगर आप यहां से ले लो मेरी, आप तो एक रख ही रहे हो, पर हमेशा याद रखना कि यार ये बहुत जरूरी है कुछ भी करने के लिए ना। और थोड़ा बोल देता हूं, आज इतने बड़े बड़े लोग हैं देश में, आप गूगल करोगे ना, कोई बड़ा स्टॉक मार्केट का लीडर था या कोई बड़ा इंडस्ट्रियल ऐसा कोई प्लेयर है, वो इतना पैसा, बेशुमार पैसा होने के बाद भी ना अपनी जिंदगी में कुछ चीजें कर पाए, ना कुछ जिंदगी उस तरह से जी पाए। क्यों? उनके पास सब कुछ था पर अपनी हेल्थ नहीं थी। तो ये याद रखिएगा, हेल्थ बहुत, अपने कुछ नहीं होगा ना पर हेल्दी रहोगे ना तो खुश रहोगे, सब कुछ होगा ना पर हेल्थ होगा ना तो दुखी रहोगे। और वक्त उसका तो वेस्टेज यानी वेस्ट ऑफ लाइफ है। मैं 2-3 बार इसलिए बोला हूँ क्योंकि कभी बार 2-3 बार बोलने से याद रहता है। I think sir, perfect answer for the same group. अरे And that's why we say don't sleep so much. और खुश रहने का ये सबसे बड़ा फंडा, खुश रहना है। ये उम्र में ना काफी बार ना कंपैरिजन में बहुत जियोगे, अरे उसको देख, उसने ऐसा किया। आपकी जिंदगी आपकी है, दूसरों से खुश हो। इफ समबडी किसी का अच्छा होता है तो खुश हो और उसे सीखो, रादर देन फीलिंग कॉम्प्लेक्स। दोस्ती बढ़ाओ, अरे मस्त है यार, लड़का बहुत अच्छा है, होशियार एकदम, इसकी दोस्ती बनाता हूँ। कुछ चीजें इट्स वेरी गुड। एंड दूसरों की खुशी में खुश होना, कभी जेलस फील नहीं करना, इससे बड़ा क्वालिटी नहीं है। वरना पूरी जिंदगी ना अपना देख के भी ना खुश नहीं रहोगे, उसका देखो नहीं, जो हमारी किस्मत में भी हमको मिलने वाला है। ये याद रख लेना, ये एक क्वालिटी है मेरे, मैं आई एम वेरी हैप्पी। मैं कभी किसी से, मेरे सर्कल में इतने लोगों के साथ काम करता हूँ, मुझे कभी किसी की जेलसी नहीं होती। कोई दूसरा सक्सेसफुल करा, मैं सबसे पहले उसको मैसेज करता हूँ। मैं सोशल मीडिया का उस पे उसके प्रोग्राम के बारे में भी लिखता हूँ। बोला खुश होना चाहिए, किसी की खुशी में खुश होना, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। क्या ना, ये सब बोनस है लाइफ के, अच्छी जिंदगी जीने के बोनस है। प्लीज यू शुड नेवर फील, दोस्तों में कभी जेलसी नहीं होनी चाहिए। एक स्पिरिट हो जाए, इसने किया मैं कैसे करूं, उससे ही जाके पूछो, सीखो। कोई अच्छा करता है, सामने से वॉक अप टू हिम, कांग्रेचुलेट हिम और हर एंड टॉक अबाउट दैट, शेयर लर्निंग। यार मेरे को बोलना कैसे किया, रादर देन कॉम्प्लेक्स, उसको जानते बहुत ईगो है, अरे छोड़ना ईगो, डोंट कीप, यू डोंट कीप ईगो। उसको है कोई बात नहीं, चला किसी तरह पटाऊं, इसके साथ बात कैसे करूं, सीख कैसे, बी वेरी इजी। ट्रस्ट मी, ज्यादातर लोग है ना इसी में जिंदगी में बहुत कुछ गवा देते। खुश, सब कुछ होने के पास बाद खुश नहीं रह सकते। और मैं हमेशा मानता हूं, मेरे वीडियोस देखना कभी इंस्टा पे तो फालतू वीडियो रखता हूं। क्यों? तभी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, सर मैं तो अरे बोला देख यार, बारिश में भीगते गाना गाता हूँ मैं, क्या प्रॉब्लम है, मेरे को रखना है। क्यों? मुझे ना टेक्नोलॉजिकली और टेक्निकली मैं बहुत स्मार्ट नहीं था पहले, आज भी बहुत कम हूँ आपके कंपेयर में। पर मुझे ये लगा कि इफ मैं ना ये इंस्टाग्राम में नहीं सीखूंगा ना कैसे करना। मेरा पहले मेरी सेक्रेटरी कर रही थी, मेरा स्टाफ करता था, तो मेरे को समझ में ही नहीं आता था कि अरे इंस्टा पे पोस्ट बराबर नहीं कर सकता था, स्टोरी तो जान दो, स्टोरी पे म्यूजिक नहीं लगा सकता था, और वो कॉपी आता ना वो नहीं कर पाता था। पिछले 6 महीनों में मैं सब सीख गया। क्यों? मैंने करना चालू किया, एकदम कोई भी स्टोरी मेरे मन में टेक्नोलॉजिकली एंड टेक्निकली ऑलवेज एडवांस रहना। पैसा खर्चा कर रहा है ना तो टेक्नोलॉजी पे डालना। क्यों? हमेशा वक्त के साथ टेक्नोलॉजी के साथ रहना बहुत अच्छा है। तो ये बात के पीछे मेरे लिए अगर इंस्टाग्राम तो मैं सीखने के लिए किया, मैं मजे करता हूँ, कुछ भी रखता हूँ। क्यों? आई डू नॉट टेक माई सेल्फ वेरी सीरियसली। आई फील कि चलना आसान है, इजी है, तो वो फ्रेंडली रहना, ये सब ना आपको लाइफ में करता क्या है, इजी रखता है। मेंटल हेल्थ पे कोई प्रेशर नहीं और खुश रहोगे एकदम। आप मुझे बोलो पार्टी में आप थक जाओगे, मैं आपसे ज्यादा डांस करूंगा। क्यों? जिस दिन मेरे को निकालना पड़ता है डांस फ्लोर से,
ऐसा नहीं मैं बहुत अच्छा डांसर हूँ, मुझे मजा आता है। आई नो माई सेल्फ, आई वॉज अ डांसर जिसको बोलते थे विद अ मैन विद 2 लेफ्ट फीट। उस कहावत का मतलब मालूम है, उसको डांस बराबर नहीं आता, उनको नहीं आता। मेरे को आज भी रिदम का सेंस बराबर नहीं है, तो मैं हर पार्टी में जाके इतना नाचा कि मुझे सब गाने के स्टेप्स मालूम होते हैं और मुझे सब गाने पे नाचना आता है। तो लोग बोलते डांस करे जेडी भाई को। आई कंप्लीटली व्हाई आई सेड जो मजे करने की जिंदगी में मजा ना बहुत कुछ सिखाता है। योर इंस्टा डोंट टेक इट वेरी सीरियसली, फॉलोअर्स आया कि नहीं, नेवर बी, वो तो एक बीमारी है, कभी उसके पीछे मत जाओ। मुझे लगी है थोड़ी व्हाई नहीं, उसके पीछे कभी मत जाओ। करो क्या, वो करो जो आपको अच्छा लगता है और जो अच्छा है। या बहुत सारा हो गया प्लीज सर, खुश रहने का एक शॉर्टकट है, आपकी शोज देखने का। एंड खाली मेरे नहीं, मैं तो बोलूं जो अच्छा होता है ना खुश रहने का, दूसरा एक तरीका बोलता हूं, शेयर। जैसे व्हेन यू वॉच समथिंग गुड, शेयर विद फ्रेंड्स। शेयरिंग हैप्पीनेस, लाफ्टर, गुड थिंग्स इज ऑलवेज गुड। और उसमें ऐसा भी नहीं है कि वो टी शर्ट लेके गया वापस नहीं दिया उसने, टी शर्ट शेयर नहीं करने का। और मैंने एक प्रोग्राम देखा, उसको उस अपना पासवर्ड भी नहीं देना नेटफ्लिक्स का, उसके पैसे खुद देखेगा, देखेगी। तो वो खाली शेयर करना, व्हाट अ शो, 5 स्टार, खुद स्टार दो, रिव्यू। यू आई एम टेलिंग यू ऑल कैन डू सो मच इन योर लाइफ, यू मस्ट नो हाउ टू डू इट। मैं तो इतना, बिकॉज क्या देखो, आप रिव्यूअर बन सकते हो, कैसे 4 स्टार 3 स्टार 5 स्टार पढ़ के जाते हो, एक ग्रुप में डालो, आई सॉ सत्य प्रेम की कथा 4 स्टार। अरे वाह, 4 स्टार दिया मैंने, क्यों? अरे व्हाट सॉन्ग्स, व्हाट ये। फ्रेंड्स में तो लिख ही सकते हो, गाली नहीं पड़ेगी कभी। क्या रे तूने लिखा, मेरे 300 रुपए गाली वेस्ट हो गया। बट और जस्ट सेइंग दैट शेयर गुड। जैसे इन्होंने बोला ना कि हमारे शो देखो, मैं तो बोलता हूँ कि सब अच्छी कंटेंट लगे, अपने एक होना चाहिए कि ये मेरा वॉचिंग टाइम है, 1 घंटा, आधा घंटा, और आई कैन डू दिस मच ओनली फॉर दिस मच टाइम, एंड कीप शेयरिंग। एंड यस, ऑफ कोर्स, कीप वॉचिंग the kind of content I can say today that we have spent more than 2 decades in this line, and we have been very conscious about giving good content which is progressive, life impacting, clean, family can watch together, there are morals, there are value। आपको अभी पुष्पा का मेरा वीडियो नहीं दिखा सकता मैं, मेरा वो लिंक तो बना लिया वी ट्रांसफर पे, मैं भेज नहीं पाया किसी को। 6 मिनट 45 सेकंड का वीडियो है, मैं एक एपिसोड देख रहा था, स्पेशली फॉर गाइज एंड गर्ल्स and whoever watching live। अगर आप इसे पुष्पा इम्पॉसिबल दिखता है तो पुष्पा इम्पॉसिबल अनदर शो टू वॉच, यू टू वॉच फॉर। अभी हम हाउ वी वर्क ऑन डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक अब्यूज वगैरह पे, तो हस्बैंड सिर्फ वाइफ पे हाथ उठाता, हाथ इज जस्ट रेट, इज नॉट हिट। उस पे हमने कम से कम 12, 15, 20 एपिसोड किए हैं। बट द वे वी हैव टेकन द स्टोरी, माँ पुष्पा बेटे को घर से निकालती है, बोलती है तू हाथ कैसे उठा सकता है। सो हमारी सोसाइटी में ना ये बहुत आसान है, लड़कों का लड़की पे हाथ उठाना बहुत आसान है, एंड इट्स सच अ सैड थिंग टू जस्ट, वागली में भी किया था, इधर भी किया। एंड यू सी दोज एपिसोड्स, एपिसोड नंबर का सोनी पे भी देखना है तो एपिसोड नंबर 326 है, वॉच दोज 20 एपिसोड एट योर कन्वीनियंस, एंड यू विल सी स्पेशली that how we address such issues with entertainment and we say so many good things। तो हमारी कंटेंट देखने में आपको ये जरूर कहूँगा कि बहुत सारी सीख आएगी और आपको खुद को बहुत सारी चीज़ों से, आपको कहीं तो आप कुछ गलत कर भी रहे हो तो रोकने में हम मदद हो सकेंगे। वी डू ऑल्सो टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ ऑल्सो एंड मल्टीपल। सो कीप वॉचिंग आवर प्रोग्राम। और मैं आपको और एक प्रोग्राम देखने की खुशखबरी देता हूँ, वो एंड में देता हूँ, मुझे जाने मत देना, बोले सर वो खुशखबरी दे दो। So we end everything by a short rapid fire। ओह वन सेकेंड ना, ये जरा ट्रिकी होता है, वन सेकेंड। हाँ, it's a lot of fun because we give you one word and you have to tell the first word that comes to your mind। ओके ओके, ये ट्रिकी होता है, ये इसमें हैम्पर जैसा कुछ नहीं है पर फिर भी ट्रिकी होता है। First is वागले की लर्निंग।
Gujarat. Comedy. Khichdi. Youth. Energy. India. Love. Favorite food. Dal roti. Favorite vacation place. Switzerland. OTT. Game of Thrones. Because that was the first mega show which caught my eyes. मैंने OTT पे पहला गेम ऑफ थ्रोन देखा. मेरे को तो पता नहीं था कि OTT. I was like lot of people are in my business were watching that. पर मैंने पहला मेरे घर पे एक होम थिएटर था. अभी बंद हो गया. अभी रिपेयरिंग है. तो उस पे ना वो गेम ऑफ थ्रोन हम लगाते थे. And I used to watch. What storytelling? You know what I learned? It's not about the other things which we immediately think of Game of Thrones. But what Game of Thrones taught me in storytelling, वो एक कैरेक्टर को इतना बड़ा बनाकर ठाट मार देते थे. So the engaging storytelling, what performances, so I loved Game of Thrones. I learned a lot. That चलना इतना टाइम क्यों लेता है स्टोरी बोलने में? अब लोग you know the kind of soaps are get stressed in our country. I learned a lot from Game of Thrones. कि storytelling should be very quick and unpredictable, engaging storytelling. I picked that from Game of Thrones. That's why I love Game of Thrones. The second last is what comes to your mind when I say I.I.M.U.N? Youth. Building nation. So you said keep this for the last, so I'll say your upcoming project. Khichdi the mood. We already shot.